Okay, good evening everyone. So we are moving into uh, another part. So आज जो parts पढ़ने वाले हैं अपन वो तुमको स्टेट बोर्ड में थे, इस बोर्ड्स में थे, but since तुम्हारे ये एग्जाम में they have been omitted म्हणून सरांनी तुम्हाला शिकवलं नाहीये ते, but JEE में है. So we are going to learn it. That are Cauchy's mean value theorem, Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem. I think Rolle's theorem तुम पढ़ चुके हो, but Lagrange's mean value theorem and Cauchy's mean value theorem ये तुमने नहीं पढ़ा है. So we are going to use means we are going to learn that basically तुम्हाला mean values theorem चं meaning plus how to use it ते सांगणार आहे मी. So आजचा पहिला टॉपिक है approximations. Approximations. आज का फर्स्ट टॉपिक है अपना approximations. Okay, so approximations का है you use approximations to find square roots किंवा errors. So basically a small change in something gives you approximations. Means अगर तुमने कुछ कैलकुलेट करते वक्त तुम्हारा एक स्मॉल एरर आ गया जो मैं अभी प्रॉब्लम करके बताने वाला हूँ तुमको. सो क्वेश्चन लिखो तो अभी समझेगा तुमको. If the radius of a sphere if the radius of a sphere is measured as 7 meter with an error of 0.02 meters, हा तुमचा स्मॉल एरर आहे तो, then find the approximate error in calculating its volume. Volume of sphere माहिती पाहिजे तुम्हाला 4/3 pi r cube. Okay, up. First of all, we will define काय काय गोष्टी आहे तुमच्याकडे. So तुम्हारा radius is 7, but your small error is 0.02 meters. Radius कितना है तुम्हारा 7 meters, but there is a small error जिसको अपन डेल्टा आर म्हणून हे करतो, which is nothing but your dr. अजून काही नाही आहे तो. ठीक है, तुमको क्या निकालना है? अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यू. सो दिस थिंग इज वेरी स्मॉल. जब भी तुम इंटीग्रेट करते हो तो व्हाट यू टेक इज dx किंवा dy, जिससे भी तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, व्हाट यू डू, यू टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट सिस्टम. फॉर एग्जांपल एरिया अंडर द कर्व, वो कर्व का एक छोटा सा पार्ट लेते हो विच इज कॉल्ड dx किंवा dy, एंड वो पार्ट को तुम इंटीग्रेट करते हो विद इन सर्टन लिमिट्स विच गिव्स यू द एरिया अंडर दैट कर्व इन बिटवीन दैट लिमिट्स. ये अपन ने पढ़ा है, राइट? सो दिस इज नथिंग बट अ स्मॉल चेंज किंवा स्मॉल एरर. यहाँ पे एरर है तो एरर, स्मॉल चेंजेस which we are going to take and आपण त्याचा एररचा कॅल्क्युलेशन करणार आहे की अप्रॉक्सिमेट एरर कैसे निकला अपना. Okay, so volume is given by V is equals to 4/3 pi r cube. This is volume of sphere. So differentiating with respect to r, क्योंकि r variable है, we get 4/3 pi into 3r square. ये गया. So what we get is dv by dr is equals to 4 pi r square. 4 pi r square. Now basically small change मैंने बोला तो कैसे लिखते हो उसको, क्यों स्मॉल एरर dv by dr is equals to dv is equals to, this is small किंवा approximate error, इसको अपन बोलेंगे approximate error dv को dv upon dr into dr किंवा to be very specific we write it as this delta r, which is small error जो तुमको बताया गया है 0.02 चा है. So dv by dr तो आपला आला है which is 4 pi r square into delta r. अब r की वैल्यू और delta r की वैल्यू डालेंगे. So 4
pi into 7 square into 0.02 square. So I never keep it 0.02. मी त्याला लिहितो 4 pi into 49 into 2 into 10 to the power 2 square into 10 to the power minus 2 square. I break it down like that, but ऐसी करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है. It's up to you. Oh, sorry, यहाँ पे square नहीं है. It's not square. मैंने सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है. डेल्टा आर था 0.02 है. सो 2 into 10 to the power minus 2. फिर मैं एंड में उसको ये करता हूँ. सो 90 इधर आएगा. सॉरी, 49 into 2. 49 and 98. 98 into 4 is 390. 98 नहीं. 49. लेट मी कैलकुलेट. अपने कैलकुलेशन बहुत ही उम्दा है और अभी मेरा ये नहीं हो रहा. So 4 into 49 into 2 is 392. So 392 pi into 10 to the power minus 2, that is equals to 2 ये किए. So 3.92. 3.92 pi. This is approximate error in the volume जो आएगा. म्हणजे तुमच्या 0.02 के एरर में that can be anything. वो ज्यादा रह सकता है, वो कम रह सकता है. त्या एरर मुळे तुमच्या व्हॉल्यूमचा एरर पहा केवढा मोठा आहे. 3.92 पाय इज द एरर दैट यू गेट ड्यू टू रेडियस में 0.02 मीटर्स का एरर है. सो दिस इज हाउ यू यूज डेरिवेटिव्स एरर कॅल्क्युलेशन साठी किंवा अप्रॉक्सिमेशन साठी. नाउ वी कम टू very important part that is called Rolle's theorem. Okay, so Rolle's theorem कशासाठी calculate होतो? To define graphs. Usually Rolle's theorem is defined or used to define graphs of any functions. ठीक है, आपल्याला त्याच्यामधून खूप काही इन्फॉर्मेशन आपण एक्सट्रॅक्ट करू शकतो. कैसे? रोल्स थेरम्स के कुछ कंडीशन है जो रोल्स थेरम सेटिस्फाई करने के ये लगते हैं. सो देयर आर 3 कंडीशंस. फर्स्ट, कंडीशंस म्हणण्यापेक्षा इफ वी आर सेड वेरीफाई रोल्स थ्योरम तो तुमको तीनों चेक करने पड़ते हैं. फर्स्ट, इफ इसको फर्स्ट मत देना, हे मेन स्टेटमेंट लिहू आपण. इफ अ फंक्शन f of x is first continuous in closed interval. ऍक्च्युअली एवढं लिहत नाही, पण ठीक आहे, आता लिहितोय मी. क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b. क्लोज्ड इंटरवल बोला तो वो क्लोज्ड ब्रैकेट्सच यायला पाहिजे. वी डोंट राइट क्लोज्ड इंटरवल, बट भूल गए होंगे तो लिखते जाएंगे. दैट इज कंटिन्यूअस at each point in the interval ab, in the interval a comma b. Okay, ये हुई फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, differentiable in, it should be differentiable in an open interval a comma b. That is differentiable at each point in the open interval a comma b. ठीक है. थर्ड, f of a is equals to f of b, then there will be at least one point c in the interval a comma b such that
f dash of c is equals to 0 such that f dash of c is equals to 0. Give Rolle's theorem. क्या क्या है? First is f of x is continuous in the closed interval a comma b. Differentiable, second point is differentiable in open interval a comma b. Third, f of a is equals to f of b, then f dash of c is equals to 0. कोई तो भी एक पॉइंट जो रहता तो एग्जाम्पल गिवेंगे. फिर अपन बड़े ये छोटा सा एग्जाम्पल तो ऐसे ही करेंगे. f of x is equals to x cube minus x square minus x and the interval is -1 2. पहली कंडीशन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो बेसिकली पहले दो कंडीशंस तो उसने वैसे ही सेटिस्फाई कर ली. पॉलिनोमियल है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले दो कंडीशंस तो उसने वैसे ही सेटिस्फाई कर लिए मेरे हिसाब से. तो अगर मैंने देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे अपन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डॅश ऑफ सी चेक करतोय मी, पण का नसेल ते की व्हेरीफाय रोल्स थेरम का नाही होणार बघू आपण. 3x minus 1. ओके, आता व्हॅल्यूज पुट करू आपण. फर्स्ट इज f of -1. f of -1 will be 3 into -1 cube minus of -1 square -1 -1 -1 -1 which is -3. Okay, and f of 2 is equals to 2 cube minus 2 square minus 1 8 minus 4 minus 3. I am safely to assume f of -1 is not equal to f of 2. तो थर्ड कंडीशन नहीं रही. ठीक है, थर्ड कंडीशन नहीं रही, पर देर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी विच विल मेक f dash of x is equals to 0 किंवा त्याला आपण डायरेक्ट म्हणू f dash of c. सो सिंस मैंने f dash of ये निकाल के रखा है एंड इफ आई पुट x is equals to 1, so f dash of 1 will be 3 into 1 minus 2 into 1 minus 1. 3 minus 2 1 minus 1 0. So there is at least one point. If it is continuous and differentiable, there is at least one point कि जहां पे वो पूरा functions f dash of c will be f dash of x at that point c will be 0, which is one point. Rolle's theorem क्यों verify नहीं हुआ? Because of this. मैं रेड में मार्क करूंगा इसको. Because of this. Because of this, f of a should be equal to f of b. तो जब मैं रोल्स थ्योरम से प्रॉब्लम करूं तब तुमको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब बोर्ड्स में यू डिड नॉट हैव एलएमवीटी. एलएमवीटी इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. उसके भी कंडीशंस, तो कंडीशंस कशा आहे पहा. फर्स्ट हेडिंग दो, लैग्रेंजेस मैथमेटिशियन. लैग्रेंजेस त्या मैथमेटिशियनचं नाव होतं, रोल्स भी मैथमेटिशियन के नाम थे. लैग्रेंजेस मीन व्हॅल्यू थेरम, LMVT म्हणतात त्याला, मीन वैल्यू थेरम. ठीक है, काफी बार तुमको ये वर्ड दिखेगा, Lagrange's मीन वैल्यू थेरम, LMVT. ओके, सो व्हाट वी गेट, Lagrange's मीन वैल्यू थेरम चे कंडिशन्स कसे आहे पहा. पहले एक जनरलाइज स्टेटमेंट, इफ अ फंक्शन f of x is first continuous in the closed interval AB, that is continuous at each point, correct, continuous at each point in the interval AB. Second, this is second condition, differentiable in the open interval AB
open interval AB that is differentiable at each point. I will reduce this statement writing differentiable at each point in the interval a comma b. ओके अब सिंस ये दो कंडीशन वो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो एलएमवीटी क्या बोलता है इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन there will be there will be at least one point C याचा प्रूफ करणार आहे आपण ये सिंस तुमने 12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा इतना डिटेल में वी आर गोइंग टू प्रूव इट one point C where very important condition A less than C less than B very important very important such that f dash of C मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा नीचे f dash of C is equals to f of B minus f of A upon B minus A f of B minus f of A upon B minus A. So Lagrange's mean value theorem gives you this. If there is at least one point C, A less than C less than B, where f dash of C is equals to f of B minus f of A upon B minus A. ठीक है, this is your Lagrange's mean value theorem ची conditions. Prove करू. We will prove it using Rolle's theorem. ठीक है, कारण कि पहले दो कंडीशंस तो अपने को सेटिस्फाई करने हैं. Prove using Rolle's theorem let यहां से शुरू करते let capital F of x is equals to ax plus f of x random function. ठीक है, random function in x. A capital F of x is equals to ax plus f of x. ठीक है, where capital A is a constant. ठीक है, where capital A is a constant such that A is equals when such that f of A is equals to f of B. f of A is equals to f of B. ठीक है, कैपिटल f of A is equals to कैपिटल f of B. रोल्स थ्योरम नहीं वेरीफाई करता है तो अपने लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर रोल्स थ्योरम से नहीं करते रहते तो वी कुड हैव बीन इन अ डिफरेंट मैनर बट सिंस वी आर वेरीफाइंग और प्रूविंग इट यूजिंग रोल्स थ्योरम f of A is equals to f of B होना कंपलसरी है. सो अपना जो A कांस्टेंट रहेगा, ये जो A कांस्टेंट है that will be such that or we will select it such that वो f of A is equals to f of B कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. ओके ना अब स्टेटमेंट्स लिखने हैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो स्टेटमेंट्स कसे येतील तुमचे since f of x is continuous since f of x is continuous in closed interval a comma b and x is continuous everywhere therefore capital F of x जर f of x is continuous in the closed interval a comma b and x is continuous everywhere तो ये जो कैपिटल f of x है फॉर एग्जांपल इसको इक्वेशन 1 देके रखते हैं तो कैपिटल f of x will be continuous everywhere of course will be continuous everywhere in a comma b closed interval a comma b. ओके आता
since फिर से अभी बड़ी वाली condition, since f of x is differentiable in a comma b and x is differentiable everywhere, शेवटी x आहे तो म्हणजे आपला x is differentiable everywhere, capital F of x will be, therefore capital F of x will be differentiable everywhere in open interval a comma b, in open interval a comma b. चल पहले दोन रोल्स थेरमचे झाले आपले प्रूफ. पहले दो क्या हो गए, प्रूव हो गए. अँड सिन्स आपण त्याला ए ला असंच घेतलंय की कॅपिटल एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॅपिटल एफ ऑफ बी होने वाला है, मीन्स रोल्स थेरम्सचे तीनही कंडिशंस सैटिस्फाई हो गए. सिंस रोल्स थेरम्स के तीनही कंडीशन सैटिस्फाई हो गए, देयर इज अ पॉइंट सी वेयर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू कह रहा है तो 0. रोल्स थ्योरम यही बोल रहा था अपने को. क्या बोल रहा था रोल्स थ्योरम? कि अगर मेरा दोनों तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, कंटिन्यूअस closed interval, continuous in closed interval a comma b, differentiable in closed interval, sorry, open interval a comma b, and f of a is equals to f of b, then we will be at there will be at least one point c in the interval a comma b such that f dash of c is equals to 0. यहाँ पे रोल्स थ्योरम से यूज कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ बी क्लियर किया है, बिकॉज ए अपन सिलेक्ट करने वाले. ए ऐसे ही सिलेक्ट होगा जब कैपिटल एफ ऑफ ए और कैपिटल एफ ऑफ बी इक्वल है. कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपण सांगितलं क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है एंड ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है. सो वी आर डन विद दिस. ना अब क्या करना है मुझे? अब मुझे सिर्फ f dash of c निकालना है. So therefore, since all the conditions are satisfied, this was first condition, sorry, this was first. Technically ये third होनी चाहिए. पहली वाली जो अपनी है, this was second, and ये अपनी है third. This is your third condition. ठीक है? Since there all three are satisfied, we get f dash of c is equals to 0. f dash of c is equals to 0. अब इधर एक मैं बेसिक चीज ये कर रहा हूँ. आता मी याला सॉल्व करू, म्हणजे आपण सॉल्व करू त्याला कसं की वी विल ब्रिंग इट इन टर्म्स ऑफ ए. ज्या कॉन्स्टंटच्या टर्म्स मध्ये वी विल ब्रिंग इट इन टर्म्स ऑफ ए. सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस f of x, ax plus f of x. Since f of a is equals to f of b, तो यहाँ पे क्या आएगा? a into small a plus f of a is equals to a into small b plus f of b. करेक्ट? सो इसको इधर लेके आ जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं. वी गेट a in bracket a minus b is equals to f of b minus f of a. So a is equals to, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस साइन बाहर, f of b minus f of a अपॉन ये a माइनस b जो इधर है, जो इधर जाने वाला है, उसका माइनस साइन बाहर निकाला तो आई गेट b माइनस a. ठीक है? ओके. सो अब मुझे क्या करना है? मुझे एक f डैश ऑफ c लाके रखना है. सो वी हैव f of x is equals to ax plus f of x differentiating with respect to x. We get capital F dash of x is equals to a, x का डेरिवेटिव 1 plus f of x का डेरिवेटिव f dash of x. Therefore f dash of c is equals to a plus f dash of c, a plus f dash of c per this here, since it verified Rolle's theorems, all the three conditions, this says that f dash of c is equals to capital F dash of c is equals to 0. Small f dash of c नाही, ते भलतंच function आहे आपलं. Capital f dash of c is equals to 0. So we get f dash of c is equals to 0. That means a plus f dash of c is equals to 0. But
ए तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू माइनस ए पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन. इसको इक्वेशन दे देते हैं. अजून कोणची इक्वेशन दिले का मी? इक्वेशन 2 दे दो इसको. फ्रॉम इक्वेशन 2 याला इक्वेशन 2 दिला आपण. a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. f dash of c is equals to minus minus cancel f of b minus f of a upon b minus a. और यही अपने को प्रूव करना था LMVT मध्ये. LMVT means Lagrange's mean value theorem. Okay, so basically we wanted to prove Lagrange's mean value theorem and आपण त्याला Lagrange's mean value theorem ला प्रूव केलं. There is two more theorems, पण त्याच्याहून पहिले मला एक example घ्यायचा है so that तुम्हारा point clear हो जाएगा. Okay, so one is question is verify Rolle's theorem for the function f of x is equals to x square plus 2x minus 8 x belongs to minus 4 comma 2. Verify Rolle's theorem मतलब तीन conditions आने वाले उसके. First, f of x is continuous. Second, f of मतलब अपना it is differentiable. f of x is differentiable. Open interval minus 4 and 2 मध्ये. And third, f of a is equals to f of b so that f dash of c is equals to 0 होतो. ठीक है. There is at least one point which is f dash of c is equals to 0. So point भी निकाल लेंगे अपन. तो पहला f of x is a polynomial function. polynomial function. इसका मीनिंग, अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मीनिंग क्या है? वो कंटिन्यूअस भी है, वो डिफरेंशिएबल भी है. Therefore, f of x is continuous at a comma b and closed interval a comma b and differentiable in open interval a comma b. Okay, open interval a comma b. f of x is polynomial function. इसका मतलब वो continuous भी है, वो differentiable भी है. ठीक है. इट डझंट मॅटर की तुमचं हे कसं आहे. आता आपल्याला प्रूव्ह नाही करावं लागणार की तो कंटिन्युअस आहे की नाही. तो तुमको पता है कि कंटिन्युअस और डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव करते हैं. ठीक है. फॉर सेकंड थिंग आई नीड टू चेक, और थर्ड थिंग दैट इज आई नीड टू चेक इज f of a is equals to f of b पाहिजे. f of a और b is nothing but -4 and 2, म्हणजे लोअर अँड अप्पर लिमिट त्याची. सो देअरफॉर पहले काढू आपण f of -4 which is -4 square plus 2 into -4 minus 8. 16 minus 8 which is equals to 0. तो f of -4 काय झाला तुमचा 0. Then we will check for f of 2. f of 2 काय आलं तुमचं 2 square plus 2 into 2 minus 8 which is 4 plus 4 minus 8 which is again हे काय झालं तुमचं 0. So basically it became 0. Now f of 2 4 minus 4 0. तो आपलं हे प्रूव्ह झालं की f of -4 is equals to f of 2 झालं, that is equals to 0. All three conditions of Rolle's theorem are satisfied. Now there should be at least one point which says that f dash of c is equals to 0. Okay, so f dash of c is equals to 0. आता तो पॉइंट बघू आपण कोणचा है. म्हणजे तो कोई भी रह सकता है. अब -4 to 2 के बीच में चाहिए, but point that c should belong between -4 to 2. ओके, आता तो पॉइंट कसा आहे पहा. सो f of x is equals to शोधावं लागेल. बेसिकली तुम ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हो, बट व्हाट वी कैन डू इज आपण थोडं स्टेप वाइज जाऊ. x square plus 2x minus 8. Therefore,
f dash of x is equals to 2x plus 2. एकदम easy हो गया. Since f dash of c is equals to 0, 2c plus 2 is equals to 0, c is equals to -1. And -1 is in -4 और 2 के बीच में, of course. So therefore Rolle's theorem is verified. क्या क्या किया? कंटिन्यूअस. फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूअस, सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबल. पॉलिनोमियल फंक्शन था तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होता. थर्ड, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है. हाँ है, दोघांचा ही आन्सर 0 आला. मग therefore there exists at least one point. There can be two. कोई किसी ने रोका नहीं. There can be three, there can be many more points, but there exists at least one point which makes मीन्स ज्याच्यावर तुमचं डिफरेंशिएशन काय राहतं 0. एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. उसको ढूंढने के लिए बेसिक फंक्शनला डेरिवेट करायचं and is equal to 0 and find x. if the linear असेल तर तुम्हाला एक व्हॅल्यू मिळेल. जर क्वाड्रेटिक रहेगा तो तुमको दो वैल्यू, क्यूबिक रहेगा तो तीन वैल्यू, एंड सो ऑन. And that's how you verify Rolle's theorem. And याचं इम्पॉर्टन्स यू विल सी की पुढे कॉशीज मीन व्हॅल्यू थेरम, अजून लॅग्रँजेसच्या जॉमेट्रिकल फॉर्म मध्ये पण लागेल. सो रोल्स थेरम तुम्हाला पक्का चाहिए. ओके, दॅट्स इट फॉर टुडे.